myself Mushir Ahmed. Now today we discuss in other food crops and we discuss about coffee production. It's also a beverage crop. So now let's start about coffee. Indian coffee is known in the world for its good quality. It means Indian coffee is famous in world for its better quality. And now the Arabica quality initially brought from Yemen is produced in the country. Yemen, the name of the coffee is Arabica quality, initially brought from Yemen, produced in the country. This variety is in great demand all over the world, and the Arabica quality coffee great demand in the whole world, and India produced that kind of Arabica quality coffee. Now the cultivation of coffee introduced in Baba Budan Hill. Baba Budan Hill, found in Western Ghat in Karnataka district, Chikmagalur. Baba Budan Mountain Hill, found Baba Budan Hill, situated in Western Ghat near Chikmagalur district, Karnataka. And it's also famous shrine for Baba Budan in Karnataka. Sufi Sant Baba Budan, famous shrine in Karnataka state. So the cultivation of coffee started in India on Baba Budan Hill. It's a very important map question. Now the major states who produced coffee productions: Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. It's also a map questions. The major state of coffee productions: Nilgiri in Karnataka. Nilgiri is a mountain range. Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu stretch in these three states. These range stretch in these three states. So Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu is the major states of coffee production. Now India produced 4% of the world's coffee production. India's production of coffee ratio in the world total productions 4%, contribute 4% coffee production in the world of India. So now that's the coffee. It's also a beverage crop. आज हम अदर फूड क्रॉप में लास्ट टॉपिक कॉफ़ी पे डिस्कशन कर रहे थे. इंडियन कॉफ़ी जो है वर्ल्ड में अपनी गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है. इसमें अरेबिका क्वालिटी जो कि शुरुआत में इसे यमन से लाया गया और यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया, इस वैरायटी की पूरे वर्ल्ड में डिमांड बहुत ज़्यादा है. इंडिया में जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन शुरू हुआ कल्टीवेशन, वह बाबा बुदन हिल, जो कि बाबा बुदन माउंटेन की में एक हिल पाई जाती है, बाबा बुदन हिल, जो कि वेस्टर्न घाट में कर्नाटक के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. यहीं पर इंडिया में कॉफ़ी का प्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था. बाबा बुदन फेमस सूफी संत की श्राइन है. हिंदू मुस्लिम फेथ का एक सिंबल के शेप में जाना जाता है कर्नाटक स्टेट में. सो मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैप का, बाबा बुदन हिल. एंड द मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग कॉफ़ी: नीलगिरी, इट्स ऑल्सो ए रेंज, माउंटेन रेंज फाउंड इन दीज थ्री स्टेट्स. Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. It's also a map question. Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Now India produces 4% of the world coffee production. इंडिया दुनिया में कॉफ़ी प्रोडक्शन में 4% का योगदान देता है.
So now that is other food crop, and the last topic today we discuss coffee.